This is a video presentation. It is not for people to malign them. मकसद नहीं है किसी को वो करना. But in last 20 years, what I am seeing at Al Shifa और जिस तरह के केसेस ऑपरेटेड हुए मेरे पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, तो जस्ट उसके लिए मैं कि प्लीज़ हैव मर्सी ऑन चिल्ड्रन. टॉपिक भी मेरा यही है, चिल्ड्रन आर नॉट सन्स ऑफ लेसर गॉड. तो थोड़ा सा उनका ख्याल करें क्योंकि बच्चे ने 4-5 साल से लेके पता नहीं कब तक जिंदा है. तो दिस इज़ फर्स्ट वीडियो. ये यू कैन सी, ये वीडियो क्वालिटी इसमें इतनी अच्छी नहीं है भारत. ये लेंस पड़ा होगा, दिस इज़ लेंस. और ये PCIL जो है ये एंटीरियर चैम्बर में बाई प्लान डाला गया. और उसके बाद यू कैन सी दैट थिकनिंग है, देयर इज़ नो व्यू ऑफ द फंडस, नथिंग. और इस बच्चे की उम्र जो थी वो हार्डली 3 या 4 साल थी. सो दिस पेशेंट केम टू मी. I did this capsulotomy and with anterior vitrectomy, okay, and then we will see the final result. And it was so thick, this fibrotic band, that I had to use this MBR to cut this band. Just see that what is coming out. Sometimes you have to take scissors. Yes, I used MBR, sir, to cut it. And it gives a feeling of cartilage while you are cutting it. I don't know. Fibrosed capsule cutting with MBR. I am using MBR to cut it. Looks to me that it was a planned surgery. Planned posterior PCD lens was put in anterior chamber with haptics fixated through the iris down. And it will prove in the next part. Next. PC है पीछे. सर ये लेंस AC में पड़ा हुआ है. नहीं, लेंस तो AC में पड़ा. हाँ, तो PC तो ये PC तो काट रहा हूँ. ये लेंस के पीछे काम किया. ये पीछे गया. This is second eye of the same patient, same presentation. IL in the AC, PCIL and same picture. ये तो you have not heard आपके लिए कहीं recommended है. Sir, if it is, that's why I am showing these cases. That's right. और age कितनी? 3 या 4 साल. This one is lensectomy. It was done elsewhere, and you see there is nothing. You can see all the lens matter over there, and this is I am using this iris repositor to separate it from this iris from the capsule and lens and everything. Unfortunately, video quality is not good, but over here it is good. So, a little bit of now fundal glow you will see. आपका नाइस तो नहीं आता. वीडियो क्वालिटी नहीं. सर ये बड़ा सोच के ना, तो मैंने कहा कि नहीं ये दिखाना चाहिए. Very good. क्योंकि वो किसी ने कहा है सर कि war is such a thing that it is not left to the generals. बस वो गॉड के साथ मेरा लेक्चर कर रहा. तो आजकल डर लगता है जनरलों का नाम लेते हुए. बट इट इज नॉट वही के ये पीड्स जो है इट्स नहीं ठीक है. सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब. मॉडरेटर्स आर तो प्लीज वही सर कह रहे हैं माफ कर देंगे. तो ये सर इधर मैं अगर वीडियो रोक लूं तो ये ऐसे लग रहा है कि ये जो है ना कैटरेक्ट, दैट इट इज कैटरेक्ट.
ठीक है सर, बट इट इज नॉट कैटरेक्ट। आमतौर पर ना हम इसको डोनट कहते होते थे, पुराने जमाने में वो सिंपल नीडलिंग करते थे, हाँ तो उसको डोनट की तरह बाकी छोड़ देते थे। तो ये तो डोनट नहीं है, पूरा पेड़ा है। पेड़ा है ना सर। डोनट जो है तो उसको अब पेड़े के अंदर you छुपा के just तो डोनट बना। just see that this is all lens matter. So this IUL is put in that, and he has left it. तो इसका नाम होगा पेड़ा आफ्टर कैटरेक्ट। I don't know, sir. So ये अब मैं इसको I am doing the cutting and capsulotomy, vitrectomy, everything, and lens को मैंने नहीं छेड़ा सर, क्योंकि that would have been a disaster for me. वो वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैं इसको कहीं और ज्यादा खूबसूरत करने के चक्कर में ये कोई कितना ये है प्राइमरी सर्जरी का? सर ये पता नहीं कब, मतलब वो इट वाज रेफर्ड फ्रॉम समवेयर एल्स एंड इट वाज रेफर्ड टू मी। सर ये जो है यू सी ये देखें कैटरेक्ट किस तरह किया गया, दैट दिस पर्सन डजंट नो हाउ टू डू पीट सर्जरी। दिस इज द सेकंड आई ऑफ द सेम पेशेंट। Now this is a short video what I am doing. The way it should be done. It should Pehli video thi, the way it should never be done. The way it should be done. This is Rexis, sir. I am using this SC chamber maintainer, and from second port this is vitrectomy cutter 2020 or something 23 batch. This lens matter is aspirated nicely. कटिंग भी यूज कर रहे हैं आप? जी सर, वो जब सिर्फ aspiration नहीं नहीं कर कटिंग भी जब जरूरत हो तो सेम टाइम। Cutting here instead of expansion. Sir, when the lens matter is difficult to aspirate, you can use the cutter. वो कंट्रोल है। Controlled होता है sir, you use. Yes. तो इस नंबर टी है। No need for फेको sir. These are बड़े मासूम मोतिये होते हैं सर। फेको की जरूरत है। ये मैं posterior caps I am doing posterior capsulotomy with the same cutter. जी, anterior vitrectomy, posterior capsulotomy, lens is in the back. And लेंस आपने पहले डाल दी। जी मैं भी ऐसे सर, करता जी सर, मैं बहुत वो वो ये डाल classical, this is a better approach. हाँ क्योंकि इसमें बैक के तो अंदर प्लेसमेंट है। सर, हाँ, पहले का लाटवी की इसको ज्यादा है। message is I think loud and clear that आप सारे लोग जो फेको कर रहे हैं ना, everyone can do Rexis. I have no doubt that you people can't do Rexis. You are doing very good adult cataract surgery. Children's surgery is a little bit different from adult surgery. You should have a little bit of patience. Patience is needed in children's surgery. आप स्क्लीरल जाते हैं, नहीं जाते, आप डायरेक्ट कार्नियल जाते हैं, okay, no problem. I am going through the scleral tunnel. I am using scleral approach. Do Rexis, pull it to the center because the capsule is very elastic. It will run away. Keep it small, and then if you have facilities like me, I am enjoying these facilities at Alchua. I am blessed that I am using AC chamber maintainer, I am using cutter and everything like that. But if you don't have these things, just aspirate it with your Simcoe cannula. It will come very nicely. This cataract will come very nicely. And then put the IUL in the bag. IUL in the bag is a must in ped surgery. आईओएल कौन सा यूज प्रेफर करते हैं? सर हमें तो हम रेनर जनरली, क्योंकि हम अल-शिफा ट्रस्ट है, वी आर पुटिंग दीज lenses फ्री ऑफ कास्ट। कभी बैग में नहीं भी डाल सकते। सर फिर डिपेंड करता है। बैग जी सर, हमारे पास हम साइरस भी यूज करते हैं सर्कस में, या हम मल्टी पीस यूज करते हैं, उसको ऑप्टिक कैप्चर कर लेते हैं। मतलब इसमें भी मैसेज है। हाँ जी। अगर तो बैग में डालना है तो स्क्वायर एंड सिंगल पीस डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप बैग को फिट ना कर सकें तो यू शुड हैव अ बैकअप राउंड हेडेड मल्टी पीस multi-piece Alcon is the best. Alcon ऑप्टिक कैप्चर आप कर लें,
दैट इज द बेस्ट। और अगर आपने एक ही शीशा मंगवाना है और आप बैकअप के कायल नहीं, हाँ तो फिर कौन सा मंगवाएंगे फिर मल्टीपीस मंगवा, क्या होगा क्या मंगवा लें मल्टीपीस, हाँ या एल्कॉन का मंगवा लें, ठीक है। तो जो सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सारे लोग ये काम कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जस्ट एक तो ये चीज़, जिस तरह मैंने दो लास्ट वो स्लाइड्स दिखाई थी ना, कि वो यू शुड हैव एन आइडिया कि कैटरेक्ट सर्जरी इस तरह नहीं होती है कि आप पूरा ऐसे इंसिजन दें लाइक इंट्रा कैप और फिर उसको धक्का दे के बाहर निकालें, तो ये दैट्स नॉट एक कैटरेक्ट। वो चीज बता दें सर आप बता दें। वो कि हमने जो कैप्सूल आर्ट में है, पोस्टीरियर कैप्सूल, हाँ, कि उसमें आपने क्या एज रखी हुई है, क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है? सर मेरी तो अब इतनी आदत बन गई हुई है ना कि मैं तो बाद में याद आता है, मैं सिस्टर से पूछता हूँ क्या एज थी, वो कहती है 8 साल तो मैं उसको कर देता हूँ। वैसे जनरली जो मेरा ना, एक मैं चीज़ देखता हूँ, इफ़ ही इज़ लाइक प्री आप, इफ़ ही इज़ कोऑपरेटिव ऑन द स्लिट लैम्प, सिंपल, अगर वो बायोमेट्रिक करवा लेता है, लेता है, एग्जामिनेशन करवा लेता है, Cooperative है। तो आर्ट में भी करवा लेगा। वो कैप्सूल आर्ट में जैक करवा लेगा, ठीक है। बट लाइक बिफोर सर्जरी यू सी देयर इज निस्टैग्मस, अच्छी उसकी वो नहीं है, डिलेड माइलस्टोन्स हैं, लाइक अब 2-3 दिन पहले मैंने एक ऑटिस्टिक बच्ची थी, उसके किए सर्जरी, आई डिड पोस्टीरियर कैप्सूल। कोई भी चीज है जैसे जी हाँ, तो इस तरह की कोई भी चीज़ है तो यू डू पोस्टीरियर कैप्सुलोटमी और दैट्स गुड। और एक ही आप रह की चीज बोल बता दें, पीडियाट्रिक कैटरेक्ट पूरा हो गया। सर, क्लोजिंग क्लोजिंग सर हम 10-0 बाइक्रल से करते हैं, बाइक्रेल से जी करते सर। हैं, और आपने इसको हाइड्रेट करके नहीं छोड़ना, नहीं छोड़, क्योंकि अगले दिन कई दफा आप एग्जामिन भी नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। फिर हमें पता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि देयर आर 3 थिंग्स अबाउट पीडियाट्रिक कैटरेक्ट: टू डिफिकल्ट टू टैकल, too difficult to plan, and too flaccid to tackle, and too reactive to handle post operatively. उसकी वजह से जैसे सर ने फरमाया, अगर आपके पास Vicryl, अवेलेबल हो तो हाँ। आइडियल, और तीनों पोर्ट्स क्लोज है, हाँ 2 या 3 जितनी बनाई है सारी क्लोज, सारी क्लोज। किसी को हाइड्रेट करके ना छोड़ें, क्योंकि उनका नाम तो लिप्सीलो है प्रॉपर, बिकॉज़ ऑफ द स्क्लेरोजेनेटिक कम है। सर बच्चा बाद में पोस्ट एनेस्थीसिया बहुत रिएक्ट करता है, बहुत वो हमारे उसके बहुत बहुत। एग्जामिन नहीं कर पाते। दूसरी चीज ये है कि जब नेक्स्ट डे आप से अगर उसका ऐसी शैलो है तो यू हैव टू गिव अनदर एनेस्थीसिया, हमने पूरा एहतमाम करा। वो स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो इसलिए अगर आप टाइम पे उसको सूचर कर दें तो आप रात को सुकून से सोएंगे और कोई मसला नहीं है। नहीं सर मैं नहीं देता, नहीं सर, जिस तरह ये अनइवेंटफुल केस लास्ट में मैंने किया है ना, तो मैं इसमें स्टीरॉइड्स भी नहीं देता, आई डोंट गिव ओरल स्टीरॉइड्स। यस, इन लाइक यूवीआइटिस केसेस, इन ट्रॉमा केसेस, उनमें देन आई गिव। हाँ वो सर हर एक की अपनी प्रेफरेंस होती है, उस पे कोई वो नहीं है, हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है सर। और भी किसी का कोई कमेंट है? What is the early stage that you go for IOL surgery in pediatric cases? IOL सर्जरी इन पीडियाट्रिक केसेस, Early stage. सर मैंने 7 months पे भी IOL किया होगा, 7 months पे, बट इट वाज यूनिलैटरल कैटरेक्ट में मैं कोशिश करता हूँ कि जब मुझे आई इजाज़त दे रही हो तो आई गो फॉर IOL। सर कोई मसला नहीं, मल्टीपीस वो बहुत फ्रेंडली है, एक तो थिन है और दूसरा वो बहुत फ्लेक्सिबल है और 12.5 मिलीमीटर का है। डॉक्टर लेकिन आई वुड एडवाइस कि आप बताएंगे इसमें योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस वो तो फिर आप सर बस बिकॉज़ एक्सपीरियंस हैंड्स यस आई थिंक सेंसिंग जो है ना, जैसे तुम्हारे 2 इयर्स है। हाँ जी सर, वो मैं सब वाले काम करता हूं, मैं हमेशा डालता हूं लेंस। सर आपका एक्सपीरियंस है, जिसका एक्सपीरियंस हैंड्स सर बाइलेटरल हो अगर 7 months हो, आई विल नॉट गो फॉर IOL straight up. अब मैं उसमें भी डालूं। लो सर, दिस इज आवर एरिया। this is a gray area, this is gray area. नंबर हमेशा अंडर ही रखते हैं।
हाँ। क्योंकि 30 से ऊपर तो मिलता नहीं, 50 पावर आ रही होती है, 45 आ रही होती है, तो 28 29 डाल देते हैं। आपको अरेंज करना पड़ता है, वैसे आप 50 तक भी लेंस अवेलेबल है, 6 माह में बट अरेंज करना पड़ता है। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको एट बर्थ सर 17 मिलीमीटर 70 सर 70 और एट 1 ईयर आराम हो गया 2021 21 हो जाती है, हाँ और एट सेकंड ईयर 22 और बाकी 30 सालों में 1 मिलीमीटर गेन होना। So that's why the 2 years has become a standard age, क्योंकि 90% ग्रोथ हो गई है। तो इसलिए अगर हमने उसको अंडर करेक्ट किया है तो वो सिर्फ 6 माह के लिए है, साल के लिए है। वो पहले इमेट्रोप होगा, फिर मायोप होगा, और मायोपिया मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मायोपिक जो किड्स हैं वो एम्ब्लायोपिक नहीं होते, वो अनकरेक्टेड भी रहते हैं, तो स्टडीज में भी अच्छे होते हैं। और दो फिर दोनों आंखों में एम्ब्लायोपिया बड़ा कॉमन है। हमारी सारी एहतियातों के बावजूद ये बड़ी अजीब बात देखी है कि वो जो कंजेनिटल कैटरैक्ट की ऑपरेटेड आईज हैं वो सिमेट्रिकली ग्रो नहीं करती, हालांकि हमने तो वही लेंस किया है, वही टेक्निक की है। सर वो अक्सर मायोपे उनकी एक्सियल लेंस ज्यादा होती डिफरेंस आ जाता है उनमें ना बाद में। बाकी बायोमेट्री डिफरेंस विल नॉट मैटर। biometry जो है Abdul Rehman has a talk on that, but less than 2 years we reduce 20% and 2 to मैंने अपने बनाए हुए हैं सर विद एक्सपीरियंस 2 to 8 वैसे 10% है, बट मैंने इसको फर्दर डिवाइड कर लेता हूँ, मतलब 2 to 5 मैं 15% पे आ जाता हूँ। सर वो हर एक का अपना एक्सपीरियंस है, वो मुझे आज तक समझ नहीं आई उसकी सर, इसलिए मैं सिंपल काम रखता हूँ। वो जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि अब तो मैंने ना आईओएल एक्सचेंज भी 8-10 साल की है, जो कि हमने 2000 के आसपास शुरू किया था जब काम 90s में। तो ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपके जो इतनी साइंस तो आप लगाए ना, अगर आपने 40 का लेंस भी डालना है और 35 का भी डालना है, लेंसेज की रेंज लिमिटेड है, और आप जितना लेंस बढ़ाएंगे उतना थिक हो जाएगा। इसलिए हम एक फास्ट पावर से ज्यादा यार ये बाकी को एनएच से कम कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, Thank you very much. थैंक यू। Very nice. बाद में फिर कर लेते हैं, आपके नाम से। जी सर, जी सर, जिसको कैसे वो करना है जनरली कैसे या होया का 30 से ज्यादा मिलता नहीं है, खराब ना तो हम या तो वो आइडियल पावर मिल जाए, थैंक यू। उससे कम होगा एबिलिटी जी, वही डाल देते हैं और उस बाकी को एनएच से कंपनसेट कर देते हैं। डॉक्टर पूरे मान विद इन 1 ईयर वो इमेट्रोपिया पे आ जाता है। السلام عليكم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا ما شئت سهلا. I'm Dr. Abdul Battat from Palestine. I am pediatric fellow in Al Shifa Trust Eye Hospital under supervisor of my HOD Professor Sumair Altaf. So today I will talk about pediatric biometry inshallah. So the factors causing inaccuracy in pediatric IOL power calculation, first of all the axial length and keratometry measurement errors, uncooperation during examination and fixation errors, supine position used for measurement, instrument designed for adult eye, not for pediatric eyes, different biometry and anatomical differences from adult using adult formula, cataract extraction with posterior capsulotomy and anterior vitrectomy may affect the effective lens position, the target refraction and growing myopic shift. So here we can see this is a child in Al Shifa Trust Eye Hospital. In the supine position, we use the applanation A-scan biometry to take the axial length. So in the supine position, there is decrease in the intraocular pressure. Also, there is difference in the axial length in the supine position from prone position from the sitting position. So all of these factors, it will affect the rule of taking accurate biometry in children. So what is the normal eye development? In full-term newborn, eye had a mean axial length of 16.8. The mean keratometric power is 51.2 and the mean lens power 34.4 diopters. In children, what is the difference from the adult? The adult is 23.6. The axial length, the mean key reading 43.5 and the IOL power is 18.8 diopter respectively. Here we can see the curve of the axial length, how with age it starts to increase slowly. And about the refraction, most of the children they are hyperwop and or approximately +2.
at birth. The hyperopia reduces in magnitude over time until the eye become emmetropic. So again, how the axial length change in children, it increased by approximately 3.9 in the first 2 years of life, then 1.2 between the second and fifth year, reaching 23.6 in the early adult years. Here we can see also the corneal curvature. So the corneal curvature, it will start to decrease. It become more, so then the cornea become more flattening, and the K reading K1 and K2 it start to decrease. So you know, in the IOL power calculation, for any formula we depend on the axial length, the K reading, and any change in the axial length it will give us an error 2.5, and any change in the K reading it will give us an error 0.9. So here I make this, actually this is schedule, but actually this reading is not very accurate each place, because when I search about these, there's big differences according to the race, according to the country. So in like Middle East is different from Pakistan, different from Africa, different from other country. But in general, corneal diameter at newborn 9.5 plus minus 0.6, the axial length 16.8, and the K reading 48 to 51. The back size is very important. So at a newborn it's 7, but at the adult, I searched like at 16 years it reached 10 to 10.5. At 2 years it's 11.7. The axial length reached 20. Then the mean K reading 45. The back size 9, and the adult it's at 12 so at 2 years the corneal diameter it's same as at adults. The axial length is 23.6, and the back size 10.5. What is target post-op refraction? So actually there is a lot of study about this, and there is a lot of pediatric ophthalmologists talk about this topic. One of the most common, and in Al-Shifa we follow this one, is the hand. The hand, he make the 10% and the 20% formula about the pediatric population. So what did he talk? He make his study on 156 pseudophakic eyes of 99 children aged between 1 month to 8 years. So the younger the child at the time of limitation, greater is the myopic shift. So he ordered for all of his patients, an infant should receive 80%. So any infant less than 2 years, we give him 80%. So just we subtracted 20% of the last IOL power. So we make it undercorrected by 20%. And for any infant more than 2 years, we subtracted by just 10%. And this is very common. It's published by the hand, and it's used in Al-Shifa Trust Eye Hospital. Other one, Blagger, he make his nomogram, and at age 3 years, he suggests post-op goal, it should be +5, at 4 +4, at 5 +3, 6, 2.25, 7, 1.5, 8, 1, 10.5, 13, he should be plano. The other one, Croft, he said also residual hyperopia of a +6 in children from 4 to 8 weeks, a +3 from 1 to 4 years, +1 in children 5 to 12 years. And this is the American Academy Organization. It's published in Carolina, restricted. So age at cataract surgery and residual refraction, and this is also very common. The doctors in Jordan, they follow this one, and also in Palestine. So at 2 months post-op refraction, 10 diopter from 2 to 4 months +9, 4 to 6 months +8, 6 to 12 +7, from 1 to 2 years +6, 2 to 4 +5, 4 to 5 +4, 5 to 6 +3, 6 to 7 +2, 7 to 8 1.5, 8 to 10 +1, 10 to 14.5. At more than 14 years, they prefer him to be plain. What is the rule of 7? Actually, when I search about this, there is a lot of rule of 5, rule of 7, and rule of 9. So rule of 7 is the most common between all of these rules. It's published by Shamrani groups. So rule of 7, where the target refraction states is calculated by subtracting the number of 7 with age in year of the children. So 7 minus age in children. Just I will give some example. Like if the child is 5 years, so 7 minus 5 years, it will become 2. So my post-op refraction, it should be +2. So the IOL power, I will subtract it or undercorrect it by 2. So if like IOL power emmetropia 20, so I will give him 18.
if he is 5 years. So if he is 7 years, I will make him emetropia, plano. Rule of 9s, he said no, we should use 9 other than 7. Rule of 5, they said 5. But I find some doctors in Palestine and Jordan, they follow this rule of 7, more common than rule of 5 and rule of 9, because like there is like more prediction errors in rule of 5 and rule of 9. Okay, infant effect study, this is like the most largest study. So it's compared the effectiveness and the problem associated with optical rehabilitation using contact lens versus IOL for the correction of a phakic infant with unilateral congenital cataract. And this study actually, I think it changed all of the words. So what is this study? It's they make a study for 114 patients. They divided into two groups. The first group, 57 group, they give him contact lens, and they observe them. What is the complication and compliance, everything for these 57 people. The other 57, they give him IOL implantation. And at 5 years, these 5 years follow-up, they study all of the complication, which is better. I should put IOL before 7 months, or I should just give him contact lens. So the conclusion of this study, no significant difference in median visual acuity at 4.5 years of age between children who underwent a primary IOL implantation and those who received contact lens to correct the aphakia. So both of them, they have the same visual acuity after 4.5 years. Better to leave infant less than 7 months old with unilateral cataract aphakic with subsequent contact lens correction unless contact lens use is a potential issue. What are these potential issues? In this study, they talk about two things. Number one, stress of the family. They become very stressed with the contact lens, remove it. So some children, they are non-compliant with them and they didn't accept it. The other thing, the potential issue, endophthalmitis and some infection. They use it in a wrong way, they didn't clean it good. So some of them, they develop infection. So they said, and the children who go for IOL implantation before 7 months at 5 years, they find they have glaucoma. Other children, they have disintegration of the IOL, so more complication develop. So they prefer contact lens less than 7 months, except for the patient who had potential issue. This is about infant aphakic study. Also in infant aphakic study, also it talk about which formula I should choose. Actually, there is a lot of study about which formula, because all of the formula is done for adult. No formula it makes specific for pediatric patient, and this is our big debate. And always which formula much better than the other. In this study, they find the SRKT and the holiday one. It has the least prediction error. It's just 0.3, and hopefully Q it reached until 2.23 value of the prediction error. So they find SRKT and holiday one less prediction error than other. I just searched about many study. Also, I find most of the study they talk SRKT and holiday one give you much better result than other study. The summary. Myopic shift in residual refractive error is observed in all children undergoing cataract surgery. This myopic shift is greater in children who are younger at the time of surgery. Myopic shift is less in pseudophakic versus aphakic eye, and also less in bilateral pseudophakic in comparison to unilateral pseudophakic. Under correction of IOL power in child is a rule. Younger the child, more the under correction. It's important to choose the correct formula for the most accurate result. And thank you so much. Very nice.